And very good evening to all of you. Nowadays, student, we are going to start the class 12th. Okay, but very well, student. According to the new NCRT, there are 13 chapter. Okay, but according to the but old version in NCRT, there are but very well 16 chapter. 3 chapter has been excluded from about class 12 biology in new NCRT. Okay, and first chapter is that is a reproduction in organism has been also excluded from but a new updated NCRT. But but very well, student, this chapter is the base, is the foundation for but very well first unit. Okay, and but very well, student, what do you mean by the reproduction? But very well, reproduction is a biological process. Yeah, it is a what? It is a biological process in which an organism produces young ones, or you can say the offspring, or you can say the progeny similar to itself. Like you have the example, आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में किस प्रकार से एक ऑर्गेनिज्म सेम अपने बॉडी से दो डिटो ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर रहा है. गॉट इट. हियर यू हैव द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल. हियर यू हैव द नेक्स्ट वन. ओके, इन केस ऑफ द ह्यूमन you have the example. Okay, and but very well, after the but birth and the but this period from the birth to the natural death in an organism is called the lifespan. Okay, and but lifespan get vary from organism to organism. Okay, like human में lifespan different है, एक बटरफ्लाई में अलग, रोज प्लांट में अलग है, वीट में अलग है, या जो हमारे पास पीपल ट्री है उसमें अलग है, मैंगो ट्री अलग है, एप्पल ट्री अलग है. सभी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान जो है वो वैरी करते हैं. एक ऑर्गेनिज्म एक स्पीशीज़ का दूसरे स्पीशीज से वैरी करता है. एंड सेकेंड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, no any individual is immortal except we have the unicellular organism like we have the amoeba, yeah, we have the paramecium. तो ये ऑर्गेनिज्म जो यूनाबर्ट सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये इनको हम इमॉर्टल बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यूनाबर्ट सिंगल सेल जो बॉडी ऑर्गेनिज्म है, जिस भी ऑर्गेनिज्म की सिंगल जिसके बॉडी में सेल है, वही सेल यू कैन से उसका जो न्यूक्लियस है, वही न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियाई बनाता है. एंड आफ्टर दो न्यूक्लियस से ही दो न्यू सेल बनता है, और एक सेल से ही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है. सो यू कैन से कि जैसे अमीबा है, अमीबा का जो बॉडी है वो कभी भी यूनाबर्ट मॉर्टल हो ही नहीं रहा, क्योंकि उसी बॉडी का यूनाबर्ट वेरी वेल डिवाइड हो करके ही आगे दो न्यू अमीबा डेवलप हो रहे हैं. सो वी कांट से कि इन केस ऑफ द यूनाबर्ट अमीबा यू कैन सी इन द यूनिसेलर कि दे इज अ मॉर्टलिटी. सो यू कैन से एक्सेप्ट द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म, नो एनी इंडिविजुअल इज इमॉर्टल. या देयर इज अ नो नेचुरल डेथ इन द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म. उसमें नेचुरल डेथ होते नहीं, क्योंकि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ही सिनोनिमस है रिप्रोडक्शन का. रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ, यू कैन से ग्रोथ इज सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन. ओके, एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप. वन इज asexual, अदर वन इज sexual. ओके, अब स्टूडेंट बट वेरी वेल, अगर हम लाइफ स्पान की बात करेंगे तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि लाइफ स्पान वेरी करता है. जैसे वी हैव बट वेरी वेल रोज प्लांट, the lifespan is a 5 to 7 years, or in case of the rice plant 3 to 7 month. Banyan tree there is a 400 plus year, but banana tree that is a 2-3 years. Dog that is a 22 years. Butterfly 1 to 2 week. Parrot it will be the 140 year. Crocodile 60 years. Horse will be the 40 to 50 years. Tortoise that is a 100 to but 150 years. Okay, and but very well, there is a crow that is a 15 years. Cow but 22 years. Elephant that is a 50 to 70 years. Fruit fly 2 weeks. Okay, human but very well 65 to 67 years. Okay, now we have a but asexual reproduction. Yeah, अब but very well student, asexual reproduction is of following types, that is a fission, budding, and vegetative propagation. Vegetative propagation in case of the plants. Okay, fission is further two type, binary as well as multiple. Okay, let but discuss one by one. And but very well student, कोई आपसे पूछेगा what do you mean by the but asexual reproduction, तो you can simply say that is a production of the young ones, or you can say the offspring or the progeny by a single parent. There is a no fusion of the gametes. And but very well, mostly asexual reproduction
will be seen in case of the unicellular organism, simple plants and animals. Okay, and but very well the young ones are total but identical to but their parents. Okay, and but that may be the morphologically बात करो या genetically, जो न्यू यंग वंस बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस होता है वो बट टोटल मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली डिट्टो होता सेम होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द क्लोन. एंड ये क्वेश्चन स्टूडेंट नीट में भी पूछा है प्रीवियस ईयर का, ये याद रखो. एंड बट वेरी वेल अब स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय द बट बट फ्यूजन. तो बट वेरी वेल in this the parent cell divide into two or the more individuals. Okay, like you have the example here, you have the पेरेंट सेल दैट इज अमीबा, और अमीबा का यहाँ पे जो न्यूक्लियस है रेड वन, यही न्यूक्लियस बट फर्स्ट इट विल ग्रो एंड देन फर्दर इट गेट बट इलोंगेट, एंड आफ्टर इलोंगेशन इट गेट बट डिवाइड इनटू टू न्यूक्लाई. और जब दो न्यूक्लाई बन जाएंगे आफ्टर दैट द साइटोप्लाज्म हैज़ बीन आल्सो सेग्रीगेटेड, बट डिवाइड हो जाएगा साइटोप्लाज्म, एंड एज अ रिजल्ट टू अमीबा गेट फॉर्म. Okay, and this is called the binary fission. Binary fission means when there will be the parent cell divided into two daughter cell, that is called the binary fission. Got it? Same in case of paramecium. Here you have the paramecium, that is a nuclei get but grow, then further elongate, then get divide, and then finally cytoplasm also get divided into the two cell. बिना न्यूक्लियस का सेल नहीं होगा, ये याद रखना बच्चों, because but very well DNA is the living biomolecule and the life is continued, that is due to the DNA. Okay, same like next one, that is a multiple fission. In this case but the parent cell divide into the many individuals, like you have in case of the plasmodium falciparum जो मलेरिया काज करता है. तो but very well in case of the plasmodium what will happen, the but nucleus get but undergoes the but multiple division and result into the many nuclei, और यही many nuclei further but get transform into the number of but individual, or you can say number of daughter individuals, like you have the plasmodium. And in case of the unfavorable condition, when the condition is unfavorable for the amoeba, in that case also the multiple fission take place. ठीक है, what will happen, and that process is called overall sporulation, and that but phenomena is called the sporulation, and the way the process, or you can say the way undergoes the but amoeba multiple fission is called the incestation. but very well what will happen कि जो अमीबा का सीडोपोडिया होता है वही सीडोपोडिया but गेट रिमूव हो जाता है, एंड फर्दर अमीबा के ऊपर but 3 लेयर्ड सिस्ट डेवलप हो जाती है अनफेवरेबल कंडीशन में. एंड व्हाट विल हैपन, जो अमीबा का but न्यूक्लाई होता है वो मल्टीपल डिवीजन फेस करता है, एज अ रिजल्ट मैनी न्यूक्लिय बनता है, एंड जैसे फेवरेबल कंडीशन आते हैं तो ये मल्टीपल न्यूक्लिय जो है मल्टीपल अमीबा के फॉर्म में but रिप्रोड्यूस होते हैं. देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन, दैट यू हैव a but a budding. but very well in this a bird appear and grow in the parent body. Here you have in case of the yeast एक स्मॉल आउटग्रोथ टेक प्लेस होगा बॉडी के ऊपर. ओके, और तब तक ही बॉडी के साथ ही बर्ड अटैच्ड रहता है जब तक ये मैच्योर नहीं होगा. वंस इट गेट मैच्योर इट गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड गेट ऑन इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल. ओके, एग्जांपल हाइड्रा, स्पंज, ईस्ट है. इन केस ऑफ द स्पंज दैट इज द इंटरनल बर्डिंग. ये स्पंज में गैम्यूल्स विच वी कॉल द गैम्यूल्स, ये इंटरनल बर्डिंग है. बट हाइड्रा में और ईस्ट में it is the but external body. Then student next one, that is a fragmentation. But very well when the body get break into the but different pieces, yeah, and each, or you can say the fragments, and each fragment get grow into an adult. Okay, because it capable of the producing offspring. Example hydra, तो hydra में but very well fragmentation भी होता. Then student in case of the plants, these are vegetative propagation, means जो plant का vegetative part होता है, that may be the root, that may be the stem, that may be the leaf, जिससे एक नया organism develop होता है. Okay, like you have the birds in case of the but ituber in case of the potato, तो potato में ये ituber से but नया potato develop होता है. Rhizomes in case of the banana as well as the ginger. Okay, birds and the rhizome arise from the nodes of the modified stem, and the nodes comes in contact with the damp soil as you can say the water, and that get produces the roots,
and finally get turned into the new plants. Adventitious bird are bryophyllum. They arise from the notch of at the margin of our leaves. ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया, ये लीव्स के थ्रू एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है. ओके, bulbil in case of the agave, offset but water hyacinth ecornia जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं. Then student, next one, that is the other but asexual reproductive structure in case of the animal, like you have the zoospores. तो zoospores but ऐसे स्पोर्स होते हैं जो एक जूस्पोरेंजिया एक्सैक्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम जूस्पोरेंजिया बोलते हैं उसके अंदर ये डेवलप होते हैं. आफ्टर द मैचुरेशन ये जूस्पोर जो होंगे ये जूस्पोरेंजिया से रिलीज होते हैं एंड फाइनली ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में इंडिपेंडेंट वे से डेवलप होते हैं. ओके, लाइक यू हैव इन केस ऑफ द सम एल्गा प्रोटिस्टा या एग्जाम्पल जैसे क्लाइमोडोमोनास में ये जूस्पोरेंजिया जूस्पोर्स. कोनिडिया इन केस ऑफ पेनिसिलियम, हियर यू हैव द कोनिडिया पेनिसिलियम. Gammules but variable in case of the sponge. Okay, and but variable asexual reproduction is a common method in simple organism like alga, fungi. But variable during adverse condition they shift to the sexual method. Okay, and but higher plants reproduce asexually mainly but vegetative. Okay.